तो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज मैच केस. ओके, मैच केस क्या होता है? ठीक है, तो इमेजिन करो हमारे पास एक मेन्यू है. फ्रॉम दैट मेन्यू यू हैव टू सिलेक्ट ए पर्टिकुलर वन. ओके, आप जो भी सिलेक्ट करोगे दैट पर्टिकुलर मेन्यू विल बी सर्व्ड और एग्जीक्यूटेड, राइट? सो like in other programming languages, in C, C++ and Java, we have learned about switch case. Okay, switch case we already have learned. In switch case, there is a keyword called switch, and you have a switch variable here. This variable carry the information for the case that is to be executed. You have the statement here, and then you write the break statement, the jump statement. Okay, कोई भी केस अगर एग्जीक्यूट होता है उसके बाद आप बाहर निकल जाते हो कहाँ से? आपका स्विच ब्लॉक से. ठीक है, सो दिस वाज ऑल इन सी, C++, okay, C++ and Java. You all have learned this thing. Okay, so in Python, match case or switch case was not already present. Okay, okay, Python actually introduced match case in 3.10 version. 3.10 वर्जन. ओके, समझ में आया? पाइथन ने 3.10 वर्जन में इंट्रोड्यूस किया मैच केस. ओके, ठीक है, उससे पहले देयर वाज नो स्विच केस, देयर वाज नो मैच केस. ओके, सो व्हाट यू यूज टू डू? पीपल यूज टू यूज द इफ एल्स और एलिफ फॉर मैच केस और इन प्लेस ऑफ मैच केस. ओके, तो अब मैच केस आ गया है, अभी क्या करेंगे? ठीक है, तो मैच केस के लिए है क्या तुम्हारे पास? ठीक है, वही स्विच केस जैसा ही है. देयर इज अ कीवर्ड. तो हमारे पास मैच केस में आपके पास क्या क्या है? ठीक है, द मैच केस. व्हाट इज गिवन इन मैच केस? फर्स्ट थिंग, द मैच कीवर्ड. यू हैव अ मैच कीवर्ड. ये मैच कीवर्ड. सेकेंड थिंग, okay, you have one or more clauses or cases, conditions. Okay, one or more case clause or blocks. Different blocks are known as clause in Python. Okay, ठीक है. Then, so for each case you have some expression. Okay, if one case is getting executed, तो अगर कोई भी केस मैच करता है तो आपके पास एग्जीक्यूटेबल्स एक्सप्रेशन होने चाहिए. ठीक है, सो नाउ लेट्स फोकस ऑन द सिंटैक्स. ओके, चलो सिंटैक्स देखते हैं. We have match, then we have a variable here, variable that carries the information for the case. Okay, case indentation. Okay, inside match. Okay, I am writing case, then you can place a pattern here. Okay, you have a pattern, then you can have a statement or expression, anything you can place. ठीक है, okay, then case pattern to statement.
Okay, so on, so on, so on. Okay, सेमीकोलन के बाद In- स्टेटमेंट लिखना है कोलोन कोलोन कोलोन, ये सर कोलोन है बेटा। कोलन के कोलोन नीचे हाँ जी, कोलोन के बाद आपको नीचे स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। ओके जी, तो सर okay ना? एक लाइन में नहीं तो उसके नीचे ना तो आपको ऐसे ये पैटर्न में लिखना है, मतलब एक इंडेंटेशन मेंटेन करके लिखना है, ठीक है। Pattern one predefined. ठीक है, ये so what Sir. are the keywords here? Aryan, good evening. The keywords are match is the keyword, case is the keyword. Okay, pattern can change. Okay, pattern can be a number, it can be any word or a what boolean value. Okay, now Sir, break statement. break statement is not there. Okay, it's missing in here. Okay, so in C, C++, in the switch case, we have a default thing. We have a default keyword that gets executed if when none of the case matches. When none of the case matches, default get executed. But in Python, we don't have that default keyword. We will use case underscore instead. Okay. Default is replaced with case underscore. So this is the default statement. Okay. So this is the syntax. Please take note of the syntax. तो अभी हम टाइप कर रहे हैं इसको, मैच केस टाइप किया मैंने, बड़ा मजे से टाइप किया, कीवर्ड सिंटैक्स भी दिखा रहा है अच्छे से कलर में, सब कुछ कर लिया, मगर जैसे ही रन किया तो बोल रहा है इनवैलिड सिंटैक्स, गलत है ये, बता रहा है गलत, क्यों बता रहा है सोचो, क्योंकि द पाइथन इन माय कंप्यूटर इज 3.9.8, you can see it's 3.9.8. okay, I need 3.10 at least to have the match case. तो मेरे कंप्यूटर में 3.10 नहीं है, तो इसलिए रन नहीं कर रहा है. I need to install that one. Okay, let me bring the new latest one. Okay, then we'll see. So now I have installed Python 11, 3.11.4. Okay, now you can see clearly, see it's running. Okay, match case is recognized now. Okay, earlier since it was 3.9.8, so that version does not support match case. Now it's supporting. Okay, so we can select any. So 5 is Friday. Yes, for 5 we are getting Friday. Okay, if I enter 10, invalid, 10 is invalid. Okay, so that's match case.